श्रीलंका टीम का एक ऐसा गेंदबाज जिसने सिर्फ 13 रन देकर 6 विकेट ले लिए थे। 19 मैचों में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला गेंदबाज अजंता मेंडिस को मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा था और अजंता मेंडिस को अब लगने लगा था कि मुझे अब दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं मार सकता। और यही कारण था कि अजंता मेंडिस का घमंड भी 7वें आसमान पर था और इसी घमंड में चूर इस गेंदबाज ने वीरेंद्र सहवाग से पंगा ले लिया था। लेकिन जब सहवाग ने पलटवार करना शुरू किया था तो टूटकर चकनाचूर हुआ था अजंता मेंडिस का घमंड। 2008 एशिया कप के फाइनल मैच में सनत जयसूर्या की 125 रन की पारी की बदौलत श्रीलंका 274 रनों का लक्ष्य भारत को देने में कामयाब हो जाती है। और फिर भारत की तरफ से मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने मैदान पर आते ही विस्फोट करना शुरू कर दिया था और मात्र 37 गेंदों पर ही 12 चौकों की मदद से 65 रन ठोक डाले थे। लेकिन जब अजंता मेंडिस को बॉलिंग अटैक पर लाया गया तो परिस्थिति बिल्कुल पलट सी गई। Comes down the wicket and gone. What a wicket! He's done it. This is a great breakthrough for the Sri Lankans. Ajantha Mendes has done the trick. Game on. Virender Sehwag gone for 60. It's the vice captain Yuvraj Singh. Interesting batting. Hold on! You beauty, Mendes. 2 wickets in an over. And next is with a big wicket, Yuvraj Singh. No clue whatsoever. Stranded in his crease, missed the ball, hits the timber. Wicket number 2 for Ajantha Mendes in the same over. Yuvraj gone for duck. It's 76 for 3. Oh, that is brilliant. Sheer brilliance. The talent of this young man. Just a mere caress and it's sped to the boundary. Bowled him. Ajantha Mendes is really turning it on. What a wicket. If 3 wickets were pressure, it's now 4 for India. Well, a similar delivery, but a poor shot. A similar delivery what is bowled to Yuvraj Singh. Didn't really turn much, but what shot was that? He's looking to pull it from the length. What a delivery. Great comeback by the Sri Lankans. Raina goes for 16 and 93 for 4. Rohit Sharma has just walked in. Has an average of 29, but he's got the head to handle pressure. Has he been given? Yes, he has. Mendes has got 4. He's been adjudged LBW, and I think that was headed for the middle. They're all up on their seats. Sri Lanka really turned it on against India. The idea of keeping away Mendes from the game didn't really work. This one just spun away from it, and Rohit Sharma closed his bat looking to hit toward mid-wicket. Look at that. The captain's happy. He knows the trophy is not too far away. That's a big wicket. A huge wicket. Rohit Sharma goes for 397 for 5. BCCI. Edge taken. Wicket number 5 for Ajantha Mendes. He deserved it. Irfan Pathan had no clue. He was looking to work the ball on the onside, edged it and went straight to Mahela Jayawardene, who is safe as a house and slips. Wicket number 7 and it's drinks break. They are delighted, the Sri Lankans. 154 for 7 India now. जब सहवाग आउट होते हैं तब भारत का स्कोर 76 रन था और उसके बाद तो पूरी भारतीय टीम ही 97 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें धोनी, युवराज, उथप्पा, रैना और इरफान पठान जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे। इन बड़े बड़े दिग्गजों को 22 वर्षीय अजंता मेंडिस ने समेट कर रख दिया था। कोई भी अजंता मेंडिस की कैरम और लेग ब्रेक बॉल को समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा प्रदर्शन मेंडिस ने भारत में ही नहीं बल्कि सभी टीमों के साथ किया था। तब मेंडिस की लड़खड़ाती गेंदों का जवाब किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं होता था, फिर चाहे वो क्रिकेट के भगवान सचिन हो या स्पिनरों को आगे बढ़ कर मारने वाले सौरव गांगुली। इसलिए पूरा विश्व क्रिकेट इस मिस्त्री स्पिनर से परेशान था।
लेकिन एकाएक परिस्थितियां बदली और भारत श्रीलंका के दौरे पर गया, जहां सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सहवाग ने अजंता मेंडिस को आड़े हाथों में लिया। उस मैच में सहवाग ने 100 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और चौकों के साथ कुछ बड़े बड़े छक्के भी जड़े। सहवाग का बल्ला उस दिन अजंता मेंडिस पर आग बरसा रहा था। एक तरफ जहां सचिन, गंभीर और द्रविड़ आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ सहवाग ने अकेले ही मैदान पर तांडव मचा रखा था और अब तक सहवाग ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। 50. It's looking ominous. That's an exceptionally well played 50. What an effort. Once again, just steers it into that region. Brings up the 100. Just holding his ground. He's reading the flight well, Virendra Sehwag. Little bit of. Oh, this time he's hit straight and another boundary. Fine shot. Well, if you bowl like that, it's going to be put away. Wherever you keep your fielders, you can't set a field for bad bowling. Oh, glorious shot. Hit it on the half volley. No stopping it. 115 without loss. Now that's flown past Van Dort's left. It was in the air. I think it would have carried had he been more to his left. 133 without loss. It's one gone down. That flew quickly. Jawatna held a sharp one down at the SSC. Oh, hammered it away. Oh, that's a great shot. A fabulous one. That's remarkable. That really is remarkable. It's the second ball that he has faced after the resumption. Oh, drives down the ground. What a fine shot again. Brings up his 100. A very, very good innings. First century in Sri Lanka. Against Sri Lanka. And what a dominant innings this has been. His 15th 100. And whenever he makes runs. और शतक पूरा करने के बाद भी सहवाग ने रुकने का नाम नहीं लिया था और जड़ दिया था दोहरा शतक। Worked it officially. And that's run down for 4 as well. 33 overs bowled once. And there it is. He's gone over the top this time. But he is about to say may not get the boundary, and he doesn't. The outfield is pretty soggy and heavy. But the stroke is brave. That's headed for the boundary. Slow outfield or fast, it doesn't matter. Really got after that one, Sehwag. He's reading Mendes well. Yes, there's that huge gap on the offside. And if it's there, if it's outside off stump, there's every chance. And another. This time short. This time more room for him. Virendra Sehwag has got 2 boundaries in consecutive deliveries. Both pretty brilliant as well, so it better be good. Oh, that is brilliant. That is a real tigri. That is worth travelling miles to see. Brilliant. It's in the air for a little while, but a little bit away from the fielders. Round about 4th slip, floating 4th slip, but gone for the boundary. And that's a great shot. There's a fielder in the deep and he can't make it. There's a fielder position just for that, to dry up Sehwag's boundaries, but he's going after Vas. It's the quickest to 5,000 test runs for India. And I'd wager that his runs have come
certainly quicker. 150 for Virender Sehwag. 11th score of 150 or more in Test match cricket. And it's come from एक तरफ जहां भारत का कोई भी बल्लेबाज मेंडिस और मुरलीधरन की कैरम बोर्ड को समझ नहीं पा रहा था, वहीं सहवाग ने इन दोनों गेंदबाजों को रडार में लेकर ऐसी बल्लेबाजी करी कि मेंडिस और मुरलीधरन चारों खाने चित हो चुके थे। Now he ran out of room on the boundary there. He's gone it straight past, and it is 6. That is a terrific hit. I got the impression that he was trying to hit it on the onside. He sliced it a bit and yet went, in fact, the safest area on the park, straight over the bowler's head. Yes, he comes down the track there and definitely looked as if he was going to hit to the leg side. He gave himself room, got his foot out of the way. Double 100 to Virender Sehwag. 5th score of 200 and above in Test match cricket. और इस तरह सहवाग की इस दोहरे शतक की बदौलत भारत ने धमाकेदार अंदाज में इस मैच को जीत लिया था। और उस दिन से जब जब मेंडिस का सामना सहवाग से हुआ था तो मेंडिस चारों खाने चित नजर आए थे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो सहवाग को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।